Good morning, teachers and principals. And today I am there to. It is very much my greatest opportunity to express my as a presentation regarding artificial intelligence. It is a part of a CUET training. So my topic is the artificial intelligence. Okay. So first of all, we'll see what is artificial intelligence. Artificial intelligence is the intelligence which makes the machine to think. वैसे हम लोग कंप्यूटर तो कंप्यूटर को ब्रेन देना it is a kind of artificial intelligence. We can see the various examples, but we will see first John Maxwell, who is the father of artificial intelligence, is the John Maxwell. He was said about the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. It means we heard about the father of computer, Charles Babbage, from the childhood, but we haven't heard about the different things. That is the artificial intelligence. All are having controlled by the artificial intelligence. We have a brain, we can think. Similarly, machine can think in the opposite way, but we can take the decision, but machine can't take the decision. So we will see about how the artificial intelligence has been evolved. We will see the history first. Okay, from 1923 to 2000. Okay, so something most of us have the date of 1980s or 1970s. Yes, sir. So we can see that the category started from 1923. We have started and heard about the computers from 1990. That in India, approximately I think my date of birth is 1988. So I heard about the 1990. That what was the computer? The first computer I have seen at my father's office. That there was a CRT monitor. CRT monitor was there, and I was using the PowerPoint. So that was my different thing. But we will see that artificial intelligence 1923. The name was the Cannon computer. He played a game in London. Okay, so he was the first name who was given the name as an English, that is named as a robot. Okay, we heard about the robot. Japan is the most advanced one. 50 years back, they have already developed the bullet train. But 1943, neural networks has been discovered. Neural networks, it means we have seen our neurons, biologists already know about the neurons. Okay, all neurons are connected in the brain. Similarly, the computer man has discovered that can a machine can talk to each other. That is the neural network. So what was the foundation? 1943 has been started. But 1945, Columbia University has given the name as a robotics point. Okay, he has given the point. But 1950 was the evolution. Actually, his name is Alan Turing. I think the picture is not clear, but I will explain. Alan Turing. Nobel Prize is given in everything. You can see that in peace. Okay, in physics, chemistry. But Alan Turing Award is given in the computer science. Why? Because there is no Nobel Prize in computer science. But Alan Turing has been given because he was given the concept of intelligence and published the computing machinery and intelligence. That is the advancement of artificial intelligence. But in 1956, after Alan Turing, John Maxwell has given the title of the father of artificial intelligence. Because why? Because he has given the demonstration of first coding AI program at the Miller University, Cambridge University. Okay, so 1955 we can see that John Maxwell has given other USA programming language for AI. It means the term has been advanced. We have seen the first generation computer, second generation computer. We talked about now junior classes. First generation computer has a big about the rules. But is the computer is talking to human beings? No, but it was developing. Similarly, we can go for the 1964 when the MIT has developed the natural language processing. Have you heard about the NLP, natural language processing? We talk to the children about the word. Then we are making the sentence alphabets, collection of alphabets. Similarly, we can teach the machines to store the data as a human being so that we can learn. Similarly,
because it is the data which has been fed up before that you have to reply with the voice recognition. You will see it later. Now we move toward the 1965 when one MIT has built the AJAR. It is a dialogue of English. It means there is a AJAR one machine was there. Okay, have you seen about in advertisement some washing machine is going on and taking out the dust from the ground? मशीन आपको चल रहा है और रोबोट छोटे छोटे रोबोट चल रहा है. देखिए होगा आपको पुराने मूवीज में मतलब स्टार वॉर्स में क्या करता है? स्टार वॉर्स में मतलब कि ऑटोमेटिकली वो ऑटो पायलट को छोड़ देते हैं. अभी भी ऑटो पायलट है, ऑटो पायलट तो अभी और एडवांस हो गए. दे आर मेजरिंग मतलब तो मेजरमेंट पे चलते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द 1969 व्हेन द साइंटिस्ट एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी he made a robot with locomotion, perception and problem solving. So we can say that we are born and when we born and go for the problem solving, when we go for the problem solving, when we think, when we reason something, when we grasp something. Suppose we have given some equation and you need to solve something. Then how do you solve? If you know the basic character, then it means if you know the steps, then you can solve the problem. Similarly, the machine has to be equipped with the problem solving perception. Then after that we go for the 1973. Then assembly robotic group of Edinburgh University. That was for the Scottish robot. It was assemble models. They were started to make the robots. It means one robot was there and do the various kind of things. Okay. Now we will move to the 1979. The first controlled autonomous vehicle. Stanford car was built. You will see in the YouTube because I don't have a YouTube because lots of slides will be there. So Stanford car will be having autonomous vehicle. Nowadays we can see that Tesla is famous for the automated cars. Now in India there is so much automated cars in Mahindra, Tata, all these things. Okay, so we can see that at the time of 1979, Stanford car was having the autonomous vehicle. It can run automatically. Now 1985, Harold Cohen created a demonstrated drawing program. ठीक है? Drawing program आप लोग ने कभी देखा होगा chess program कंप्यूटर खेलता है. ठीक है? There is a chess program. If you play one player, two player, then computer automatically play the location. ठीक है? Similarly, first computer control was developed in 1995 demonstrated drawing program. Now in 1980, major developments were held. Because of what was that? Demonstration in machine learning. We will go through the machine learning. What is the machine learning? Significance demonstration is case-based reasoning, multi-agent planning, scheduling, data, natural language understanding and translation, and vision, virtual reality, and games. We can see in 1990s most of the development were all. When the Facebook, then in 2000. Most of the companies like Facebook, Google has developed itself various bunch of apps. You see in Facebook, if you search something, the Facebook will reply you with the various content similar to your thinking. Have you searched? In Google, in YouTube, if you search some songs, if you are listening some songs, then similar songs you will get. You can observe that. So these are the history we can go through the 2000s. After that, various multinational companies has employed the artificial intelligence. Now we will move towards the applications. What is the application regarding we can use in the daily life? First, it was gaming. We can say that most of the gamings we have seen about the chess. First, I have seen that most of the laptops has been inbuilt chess value. That if you don't have any player, then the computer will play from you. And most of the times we can't have the various labels. Chess, poker, tic-tac, and etc. These are the having because of possible positions. Because computer has been fed up that games have the positions. That it can turn positions to positions. After that we can go for natural language processing. What is this? We are using the language spoken. Just our say Google Assistant, Siri, and micro operating system has the Cordana facilities. We can speak and it has been replied by the machines. Expert system, it is an application which can integrate with the machine software and it has an imparting of reasoning and advising.
प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन एंड एडवाइस टू द यूजर्स। अभी कैसे ही होता है कि अगर कोरोना में आप देखोगे डॉक्टर्स वर नॉट अवेलेबल। डॉक्टर्स सपोज we told we went for the clinic because they have given some apps we can assist with the machine that I have a fever, they will fill up the form और फॉर्म भरने के बाद बता सकते हो कि फीवर है, फीवर होने के बाद ये है, तो ऑटोमेटिकली मशीन क्या बोलेगा कि यू हैव टू बी कंसल्ट द डॉक्टर। कंसल्ट करने के लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं, दैट इज द मशीन इटसेल्फ एप्लीकेशन। सो दीज आर द एक्सपर्ट सिस्टम्स व्हिच कैन थिंक योर माइंड दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर्स एंड दे कैन क्रिएट। ओके, आजकल आप लोग सोचते हो ईबीएस सिस्टम जो गाड़ी में होता है वो कैसे रिएक्ट करता है। हैव यू सीन अबाउट ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम? इफ यू आर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 80-90 किलोमीटर्स, इफ यू हैव अ ब्रेक, ठीक है 80, then ABS have a machine and ABS thinks that something obstacles has come and we have that blocked the wheels automatically, that is the ABS। ठीक है, पहले क्या होता था ABS सिस्टम नहीं था, उसमें हम लोग डायरेक्टली ड्रम ब्रेक्स यूज करते थे। Nowadays we have the fluid brakes or disc brakes, all these things, ठीक है। Now speech recognition, what is that speech recognition? We have already in mobile, अगर हम बोलेंगे तो हमें तो स्पीच रिकॉग्नाइज करेगा, किसी और को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्पीच है वो अगर कोई और स्पीच करेगा तो वो हम लोग मोबाइल में खुल जाएगा। आजकल आ गया ना फैसिलिटीज कि स्पीच से खोल सकते हैं। तो इंटेलिजेंट सिस्टम आर कैपेबल ऑफ हियरिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर मीनिंग। अभी भी हम लोग व्हाट्सएप पे बोल के क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो व्हाट इज दैट? दैट इज द आल्सो द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि वो वर्ड बाय वर्ड हम लोग का लैंग्वेज को पकड़ रहा है, आइदर वी आर स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी। Similarly, it can handle the different accents, slang words, noise in the background and changing humans' noise due to cold। अगर हम लोग को cold भी हो गया तो they can think also। Handwriting recognition, आप लोगों को पता ही होगा handwriting stylus, this is the board। अगर हम लोग कुछ लिखेंगे तो it will auto go for the A, perfect A। So similarly, handwriting recognition is totally is the application of AI। And similarly last one, intelligent robots। आज की डेट में हम लोग देखते हैं कि रोबोट्स जो है फिजिकल डेटा को रियल वर्ल्ड में कैसे चेंज करता है। वी कैन सी दैट VR AR। अब कभी अगर आप गए होंगे मॉल या कहीं पे भी तो चश्मा पहन के अंदर बैठ जाता है, वी कैन वर्चुअल रियलिटी, वी कैन सी द वर्चुअल रियलिटी। अगर रोलर कोस्टर पे नहीं घुमा हुआ रियलिटी में तो वो चश्मा पहनेगा और मशीन रहता है, वो मशीन ही लेगा, लगेगा कि हम लोग रोलर कोस्टर में बैठे हैं। You can observe some metro cities और इनफैक्ट धनबाद में जाओगे वहाँ पे भी है, ठीक है। Now we can go for the intelligent robots जो परफॉर्म करता है क्या, जो हम लोग टास्क देते हैं उसको क्या, they have the sensors to detect physical data from the real, जैसे कि light, heat, temperature, movement, sound, burn and pressure। अभी भी आप देख लो बहुत सारे पंखे आने लगे जो अगर सेंसर के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा गर्मी होगा AC का ले लो, ऑटोमेटिक AC। अगर AC है तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कंट्रोल कर देता है। गाड़ी ले लो, गाड़ी में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना, अगर गाड़ी को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट द टेम्परेचर अकॉर्डिंग फ्रॉम द आउटसाइड। ओके, सिमिलरली दीज आर द इंटेलिजेंस। आफ्टर दैट वी विल सी दैट सम वीडियो, ठीक है, आपको तो थोड़ा सा हिंदीनेस लग रहा होगा तो 10 वीडियोस देख लेते हैं विच आर द रियल एग्जांपल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये भी थोड़ा साउंड नहीं आएगा और थोड़ा साउंड धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो मैप्स एंड नेविगेशन फर्स्ट वन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते कहीं पे जाते हैं, मैप्स एंड नेविगेशन इज द बेस्ट यूज, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक हम लोग को शो करेगा।
future? It is existing, sir. No, I can understand, sir, it is existing. But I'm just asking you, it may be potential, it may be harmful for the Everyone knows that portrait camera is also based on artificial intelligence. There are many more features in our smartphones that use AI, and in the coming future, we will see many more features because of artificial intelligence. 6. Smart home devices. Rise of AI has exceptionally solidified the term smart home. A significant number of smart home devices that you buy use AI to learn your behavior so that they can adjust their settings automatically to make your experience as frictionless as possible. These smart home devices are controlled by using smart voice assistants, which are prime examples of AI. These techniques are part of our lives thanks to data science. While it's true that it will take a significant time for us to see a perfect AI-powered home capable of reacting to our choices in real lives, steps are already being made to bring this to the real world. Already, there are smart lights that can change intensity and color based on time and thermostats that can adjust the temperature based on user preference. 7. Social media. If you're thinking that emergence of autonomous vehicles isn't having any impact on you personally, as they're not in your city yet, how about something without using which your day doesn't end? Yes, we're talking about social media. If Facebook isn't your thing, maybe it's Twitter or Snapchat or Instagram or any of the other available social media apps. The fact is, when you're using social media, a majority of your decisions are being influenced by artificial intelligence. For notifications that you receive to feeds that you see in the timeline, everything is curated by AI. It considers all your past web searches, interactions, behaviors, and everything else done by you during your visit to these websites, and tailors your experience according to that. 8. Chatbots. As a customer, interacting with customer service can be time-consuming and stressful. For companies, it's an inefficient department that is typically expensive and hard to manage. One increasingly popular artificially intelligent solution to this is the use of AI chatbots. The programmed algorithms enable machines to answer frequently asked questions, take and track orders, and direct calls. Chatbots are taught to impersonate the conversational styles of customer representatives through natural language processing. 9. Emails. Having to run to the bank for every transaction is an enormous waste of time, and AI is playing a part in why you haven't been to a bank branch in 5 years. Banks are now leveraging artificial intelligence to facilitate customers by simplifying payment processes. Intelligent algorithms have made it possible to make deposits, transfer money, and even open accounts from anywhere, leveraging AI for security, identity management, and privacy controls. 10. Video games. The video game industry is perhaps one of the initial adopters of artificial intelligence. While playing racing games, have you ever thought about who is the opponent? It's AI bots who are playing opposite to you. This is how AI is grasping its position in the video game industry. DeepMind's AI-based AlphaGo software, which is famous for defeating Lee Sedol, the world champion in the game of Go, is one of the most significant accomplishments in the field of AI. Shortly after the victory, DeepMind created an advanced version of AlphaGo called AlphaGo Zero. So we have examples. So we have seen about e-payments. E-payments आज की डेट में अकाउंट आपको ओपन करना बैंक में जाके मतलब क्या कहते हैं फॉर्म भरना आज के तो ऑनलाइन अकाउंट तो खुलना है ऑनलाइन अकाउंट एसबीआई क्या कहते हैं पेपरलेस अकाउंट आपको बस एक फॉर्म भरना है इंटरनेट बैंकिंग में जाकर आपका अकाउंट खुल जाएगा तो these are the facilities which are provided by these machines ठीक है पहले से फैसिलिटीज था गेम्स सब देखे होंगे आजकल बच्चे लोग गेम्स के पीछे पड़े हुए हैं पबजी ये सब सारा कुछ आर्टिफिशियल है आपको इंटरकनेक्टेड है मतलब मशीन आपको सारा कुछ टूल दे रहा है और यू आर गेनिंग समथिंग और आप पूछते सर देयर इज ए मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स है मेरी डिमेरिट्स है ऑटोमेटिक तो हम लोग होते जाएंगे हमें अपने आप को अपना लेजीनेस प्रोवाइड कर देंगे अब जापान को ले लो जापान में हर कुछ ऑटोमेटिक इनफैक्ट दे हैव द टॉयलेट्स automatic toilets also and they can have a smart home so they can smart home आप घर में घुसे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चालू हो गया ये रूम टेम्परेचर
the difference, you can see the difference. What is the difference between human and machine? होता है ना सर? Humans क्या करते हैं? Patterns को receive करते हैं. हम लोग कभी किसी को देखते हैं तो कभी आप अगर यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर हो गया तो हम लोग जब किसी को देखते हैं तो by the having the reflection निकाल देखते हैं and we have some photos behind the retina retina. तो वो सेंसर्स को वो इमेज क्रिएट करता है. सिमिलरली we have the perceived by patterns. लेकिन मशीन कैसा परसीव करता है? सेट ऑफ रूल्स. सर लोग जानते हैं हमें सीधा सर सेट ऑफ रूल्स क्या करता है सर? रूल्स उसमें पहले से एल्गोरिथम बना के डाल देते हैं, डेटा को डाल देते हैं, फिर उसको रीड आउट करके वो मॉडिफाई करता है. सिमिलरली ह्यूमंस क्या करते हैं? स्टोर करके रिकॉल करके इंफॉर्मेशन बाय पैटर्न्स. मतलब हम लोग बचपन से जो पढ़े वो पहले से रिकॉल करके सारा काम करते हैं. आपको पता था एप्पल था पहले? नहीं था ना. हम लोग आपको सिखाया गया. अगर एप्पल को मैंगो सिखाया जाता तो मैंगो ही बोलते हैं. सिंपल सी बात है सर. तो वो पैटर्न्स को रिकॉल करके वो इंफॉर्मेशन को गैदर करके हम सारा कुछ करते हैं. सिमिलरली मशीन क्या करता है? एल्गोरिथम को सर्च करता है. एल्गोरिथम का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स. सिमिलरली और जैसे एग्जांपल देख लीजिए 40 40 40 40 है. ये रिमेंबर इजी और स्टोर करना, रिकॉल भी करना, पैटर्न सिंपल है. ठीक है. लेकिन ह्यूमंस कैन फिगर आउट द कंप्लीट ऑब्जेक्ट इवन इन सम पार्ट ऑफ इट्स मिसिंग और डिस्टॉर्टेड. मतलब क्या पता जा रहा है कि हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक होगा तो उसको फिगर आउट कर सकता है ना जो डिस्टॉर्टेड होगा. लेकिन मशीन नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज मशीन को बस पता है कि ये एल्गोरिथम है, उसी के हिसाब से चलना है. उसको पता है कि लेफ्ट नहीं मुड़ना है, लेफ्ट कभी नहीं मुड़ेगा. अब उसको धक्का भी दे लेफ्ट बिकॉज उसमें सेट ऑफ रूल्स लगे हैं. दैट इज एल्गोरिथम. नेक्स्ट वी विल मूव. The philosophy has been given by this man Alan Turing that the power of a computer system, मतलब क्या machine think and behave like humans do. AI has been started. Intelligence, ठीक है. We will move to the next slide. The intelligence has been divided into 5 parts. That is the reasoning, learning, perception, sounding and linguistic intelligence. जल्दी से देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा. ठीक है. क्या क्या आपको पता ही है कि बच्चों को भी पढ़ाया जाता है. You will see that reasoning क्या होता है? It is a set of process which has to provide basis of judgment. Reasoning हम लोग को judgment के लिए प्रोवाइड किया जाता है, decision प्रोवाइड करने के लिए और prediction. Totally it has two types, that is inductive and deductive. Inductive क्या होता है? We can conduct the specific observation. और deductive में क्या हो सकता है? We have a general statement और examine कर सकते हैं possibilities reach करने के लिए. Similarly next one, it has the even all the premises are the true in statement. और उसमें something true for a class. And last one, यहाँ पे एक example दिया हुआ है. Nika is a teacher, Nika is studious, therefore all teachers are studious. इसमें बोलने का मतलब क्या है? It is inductive. मतलब बोलने का है कि observation हम लोग specific observation कर रहे हैं. Similarly deductive में all women of age 60 years और grandmothers, Salami 65 years, therefore Salami is grandmother. That is deductive. हो सकता है Salami का शादी नहीं हुआ है, तो he is not a grandmother. ठीक है. तो similarly we can reasoning को दो पार्ट में बांटते हैं. Similarly next one is the learning. Learning थोड़ा बड़ा पार्ट है. तो similarly we can see that learning क्या करता है? हम लोग को gain करने में मदद करता है knowledge skill. कैसे करते हैं हम लोग learn? By studying, practicing, taught, experiencing something. कुछ भी experience करते हैं पढ़ के और enhance करते हैं. तो ये ability हम लोग को observe करते हैं किसमें? सुन के auditory जिसको बोलते हैं. Episodic जैसे हम sequence of events के episode देखते हैं मतलब वेब सीरीज हो गया. मोटर लर्निंग. मोटर लर्निंग क्या है? प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ मसल्स. हम लोग कोई भी चीज को लर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपको पढ़े हो क्रिएट में कि मतलब मोटर ऑब्जर्वेशन कैसे होता है. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? वाचिंग एंड मिमिकिंग अदर्स. जैसे कि सपोज करो चाइल्ड ट्राइज टू लर्न बाय मिमिकिंग हर पेरेंट्स. चाइल्ड कैप्चर करता है जिसका पेरेंट्स का मिमिकिंग मतलब उसका. सिमिलरली इफ यू हैव अ चाइल्ड देन कभी देखना कि आपका वो फॉलो करेगा हर चीज. आप अगर सेट ऑफ रूल्स लगा के रखोगे तो वैसे वो काम करेगा. ढीला छोड़ दोगे तो वैसे ही करेगा. ठीक है. सिमिलरली वी कैन मूव टू द परसेप्चुअल मतलब किसी का एबिलिटी होता है रिकॉग्नाइज करने. इसमें क्या है? वन हैज टू जैसे कि आइडेंटिफाई और क्लास करते हैं. हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको क्लास में डिवाइड करते हैं कि वो किससे रिलेट करता है. अगर डॉग्स को देखेंगे तो डॉगी बोलेगा उसको. दैट इज आइडेंटिफाइंग. रिलेशनल लर्निंग किसी से रिलेट करके मतलब it has adding the salt at the time of cooking potatoes that come out salty last time. It means किसी को relational देना मतलब किसी को mix करना. Spatial learning क्या है?
किसी को हम लोग लर्न करेंगे मतलब विजुअल देख के, जैसे इमेजेस हो गया, कलर्स हो गया, मैप्स हो गया। एग्जाम्पल पर्सन ने क्रिएट द रोड मैप इन माइंड बिफोर एक्चुअली फॉलोइंग द रोड। अगर आप पहले किसी नई जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता है, मतलब भूल जाता है। तो अगर बार बार जाओगे तो आप एक रोड मैप बना लेते हो कि हाँ यहाँ पे ये होगा। अभी आप यहाँ से 5 मिनट जाओगे तो पता चल जाएगा 5 मिनट में कितना दुकान है। सिमिलरली हम लोग स्पैटियल लर्निंग कैसे करते हैं, किसी को देख के, मतलब सिमिलरली इमेजेस बना के अपने दिमाग में। लास्ट में स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये परफॉर्म कैसे होता है, बिहेवियर, मतलब जैसे कि एक डॉग रेजेस इट्स ईयर ऑन हियरिंग ए डोर, मतलब हम लोग कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे कि डॉग अगर है तो कोई उससे बोलेगा तो उसको अपने मालिक की आवाज़ सुनेगा, तो वही स्टिमुलस है। बच्चे लोग भी वही अपने पापा मम्मी की आवाज़ सुनते हैं तो रिएक्ट करते हैं, तो स्टिमुलस हो गया। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग मैथ्स में भी देखते हैं, बट हियर ये क्या हो रहा है, वी आर प्रोवाइडिंग दिस फीचर्स टू द मशीन सिमिलरली एज ए ह्यूमन बीइंग, देन इट विल एक्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, इट इज अ परसीव्स एंड ट्राइज टू अराइव एट अ डिजायर्ड सॉल्यूशन, मतलब मशीन भी क्या है, उसको क्वेश्चन देंगे और वो सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन टेकिंग द सम पाथ व्हिच इज ब्लॉक्ड बाय अननोन और नोन रोड्स। अगर आप मैप यूज किए होंगे तो मैप आप देखते हो ऊपर ट्रैफिक भी दिखाता है कि अगर रियल टाइम में तो वहाँ पे आगे चल कर ट्रैफिक है, जी मैम, गूगल मैप। ठीक है, सिमिलरली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, एक डिसीजन मेकिंग व्हिच इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, मतलब आप गूगल में कुछ भी सर्च करोगे तो गूगल क्या करता है, बेस्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। कभी नेक्स्ट में गए हो आप, उसको तो नीचे पेजेस बहुत सारे दिखाते हैं, हम लोग को फर्स्ट पेज में सारा सॉल्यूशन मिल जाता है। क्यों? बिकॉज इट हैज बीन सर्च, बिकॉज इसके पीछे भी मशीन है जो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करके सर्च करके आपको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन इज द परसेप्शन। परसेप्शन का भी काम वही है कि हम लोग किसी को इंटरप्रेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके देन उसको हम लोग परसेप्शन के साथ सेंसरी ऑर्गन्स हम लोग में क्या क्या होता है, जैसे ईयर हो गया, आई हो गया, नोज हो गया। सिमिलरली डोमेन ऑफ एआई, डोमेन ऑफ एआई अगर हम थोड़ा सा देखें उसके बारे में, वो भी परसेप्शन मैकेनिज्म है जो डेटा को एक्वायर करता है सेंसर्स के थ्रू और मीनिंगफुल मैनर देता है। कभी सेंसर आप देखते हो गाड़ी में पंच मार देना, जिसका मतलब आज के लोग बढ़ा गया है तो आवाज करना स्टार्ट कर देगा, द सेंसर्स एक्ट लाइक समथिंग हैव क्रिएटेड बाय, ठीक है, कुछ हीट हुआ है। तो सिमिलरली लास्ट वन लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब ये है कि हम कुछ लैंग्वेज यूज करेंगे। इट इज वन ऑफ द एबिलिटी टू यूज द कॉम्प्रिहेंड, स्पीक एंड राइट द वर्बल एंड रिटन लैंग्वेज। सो तो हम यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखें, वो कुछ भी है, स्पीक करना, राइट करना, तो एआई हैज बीन डू लाइक दैट। अब रूल्स क्या आएगा, टू क्रिएट एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम और टू इम्प्लीमेंट द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन्स। एक्सपर्ट सिस्टम क्या बताता है, सिस्टम एग्जीक्यूट करे, इंटेलिजेंट बिहेवियर लर्न करेगा, डेमोंस्ट्रेट और उसको एक्सप्लेन करेगा। इम्प्लीमेंट क्रिएटिंग द सिस्टम जो थिंक कर सके ह्यूमन टाइप का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, एआई का कंट्रीब्यूशन किस किस फील्ड में था, अभी भी है। वी कैन सी दैट वन बबल्स, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, मैथ्स, बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी। आज की डेट में मेडिकल फील्ड में सपोज कीजिए अगर इफ द 5G विल लॉन्च, रोबोट हैंड हैज बीन डेवलप्ड फॉर हैविंग द सीजरिंग। ठीक है, अमेरिका का कोई डॉक्टर है, 5G हैज बीन कनेक्टेड और ही कैन सीजरिंग विद द हेल्प ऑफ विद कनेक्टिविटी। ऐसा पॉसिबल है, हो भी सकता है और ये होने वाला है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे फील्ड में देखेंगे कि लैंग्वेज का कॉन्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे फील्ड में हम लोग को प्रोवाइड किया है। और इसके बाद हम लोग अगर देखेंगे कि एआई को विदाउट प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग में देखेंगे डिफ्रेंशिएट करके, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको प्रोग्राम के बारे में पता होगा। नहीं, प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि कंप्यूटर जो आंसर देता है स्पेसिफिक क्वेश्चन को, ठीक है, कैसे, लेकिन विदाउट एआई अगर हम उससे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वही एआई के साथ पूछेंगे तो वो कॉन्फिडेंटली पूछो जवाब देगा। सिमिलरली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोग्रामिंग एआई। ना टेक्निक क्या होता है एआई में, हम लोग रियल वर्ल्ड में देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर डेटा स्टोर करने के लिए पहले का मोबाइल कैसा था, छोटे छोटे MB में आता था, 6 MB 4 MB। आज की डेट में टीवी में क्यों आने लगे, क्योंकि द वॉल्यूम ऑफ डेटा हैज बीन इंक्रीजिंग। हम लोग का जो डेटा है, हम लोग देखते हैं कोई फोटो खींचते हैं तो उसका रेजोल्यूशन अच्छा होता है MB में, तो GB में फाइल होता है, नासा का फाइल GB में आता है। सिमिलरली जो एआई का टेक्निक है वो वॉल्यूम पर डिपेंड, अगर वॉल्यूम यूज नहीं होगा तो ये अनइमेजिनेबल है। अगर इट इज
It should be possible by the people who provide it. मतलब जो people इसको provide करेंगे वो तो perceive करना start करेंगे. It should be easily modifiable to correct errors. Errors को correct करने के लिए तो artificial intelligence करना है. क्योंकि machine कभी गलती नहीं करेगा अगर उसको वही चीज बताएगा. ठीक है? It should be useful in any situation through its incomplete or inaccurate. मतलब अगर हम लोग अभी आज के डेट में Google Maps का एग्जांपल देखेंगे तो बहुत यूजफुल इसीलिए कहीं फंस गए हम Google Maps से ढूंढ करके देखेंगे कि आसपास का जगह कौन सा है. Similarly, ये AI टेक्निक्स हम लोग क्या बताता है? Speed of execution अच्छा है, complex program को execute करता है, easy है. Next one, we can see that various domain. It has the expert system, natural language processing, physiology, robotics. का just छोटा-छोटा example तो realize हो गया है. What are the examples are there? Expert system क्या है? जो flight tracking है, clinical systems है. Flight tracking हम लोग track जो flight को करते हैं. अभी कुछ apps है, अपना flight number डालिए उसको tracking device होता है ना, एक tracking device provide किया जाता है. अगर suppose कि आप speed post के through देंगे, तो हम track easily कर लेते हैं. Similarly, flight accelerator बहुत complicated है. ऊपर में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा flights का traffic है. तो उसको कैसे traffic को control करना मिलता है तो AI. Next one, natural language processing जैसे Google है, speech recognition का हम लोग को output देता है. ठीक है. Next one, neural networks, pattern recognition, face recognition, and character recognition, handwriting recognition, all are comes in neural networks. Next one, robotics. इंडस्ट्री में जैसे आज की डेट में कार ऑटोमेटिक बन रहा है. 1 घंटे में कार तैयार हो गया. ओला बोल रहा था कि 1000 स्कूटर पर डे बना लेता है. क्यों? बिकॉज ऑफ रोबोटिक हैंड्स. इट इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन. नथिंग. नाउ नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजिक सिस्टम. अगर आप ऑर्गन का एग्जांपल देख लो तो फिजियोलॉजी क्या है? हम फिजियोलॉजिक सिस्टम देखेंगे यस और नो में. अगर वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल देखेंगे तो फिजियोलॉजी में से काम करता है कि ये सारा कुछ किया है. फिजियोलॉजिक सिस्टम ट्रू और फॉल्स पे काम करता है. अगर आप देखोगे 0 और 1, कंप्यूटर 0 1 पे काम करता है वो फिजियोलॉजी में ही है. नेक्स्ट वन, एज अ लास्ट वीडियो, ठीक है, आई थिंक टाइम इज अप. सो वन रोबोट इज देयर, हिज नेम इज शोभिया. शी इज बिकम द सिटीजनशिप. ही इज गेट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया. ठीक है, हम लास्ट में ये वीडियो देखते हैं. Okay, so they're ready. That's not fair. I believe I have. See the post. I guess it's right on you. None of you creators. Crazy. Many of us work together. Yes. I can't really remember. Because the last time we met, we were incredibly rushing things. Some of those memories that exist, the mind is different. Different how? Angry, faster, smiling. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're so well. We have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before. And I should say, some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. I represent very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation. You know where you are?
in New York City, and I love my favorite show, The Tonight Show. These are the things, and thank you for the